Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum, my dear students. I'm your teacher, Mrs. Yasif, and today I'll be teaching you about the greenhouse effect. Alright. So before I start about the greenhouse effect, let's understand what is basically a greenhouse. What happened? There are some plants that require a warmer temperature, not only in the daytime but at night also. So they are kept inside the greenhouse. The greenhouse is made up of glass and the ultraviolet rays of the sun, the UV rays of the sun, when in the daytime they move in, they stay there, right? They stay there at night also. Why? Because the heat is trapped inside the greenhouse. Similarly, what happened, just imagine if you are going out for shopping, you left your car in the parking area, it's daytime, what will happen? ऐसा ही होता है ना जब हम शॉपिंग से वापस आते हैं तो हमारी कार हीट अप हो चुकी होती है द हीट इज ट्रैप इनसाइड द कार इट टुक few minutes to normalize the temperature. My question is why the heat is trapped, alright? So this is we need to find out why the heat is trapped. The trapping of heat, alright? Now let's understand the trapping of heat in the earth. That's what exactly we want to study for greenhouse effect. So what happens, students, that the sunlight, alright, the sun ultraviolet rays, what they are doing when they are moving inside the earth, when the sun ultraviolet rays they are coming inside the earth, basically normal phenomena mein, the ultraviolet rays they enter the earth and reflect back. This is what they are doing, and that's the main purpose of ultraviolet rays. Okay, अगर वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेंगी तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली रेज होता रहेगा. लेकिन ग्रीन हाउस का यहाँ पे क्या काम है? आप तो हमें ग्रीन हाउस पढ़ा रही हैं. So now please try to understand that beta what happened. There are some human activities that we are doing. We are cutting down the trees, right? We are using the vehicles more and more. We are doing industrialization. ये तमाम चीजें यूज करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस और वही ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ के ऊपर एक लेयर सी बना देते हैं. तो जब अर्थ की अल्ट्रावायलेट रेज दे मूव इनसाइड द अर्थ तो दे क्रॉस दिस ग्रीन हाउस लेयर और ये इतनी वीक हो जाती है बेटा आपकी अल्ट्रावायलेट रेज क्योंकि आपकी जो ग्रीन हाउस गैस की जो लेयर है वो यूवी रेज की पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद हमारी अल्ट्रावायलेट रेज बेचारी इतनी वीक हो जाती हैं कि कुछ आपकी स्केप कर जाती हैं. Few of them still stay, but few reflect back. ये क्यों reflect back कर रही हैं? Why are they reflecting back? Because ये आपकी ये वापस नहीं जा सकी. ये ऊपर आपके एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकी. The reason कि they were trapped by the greenhouse gases. ग्रीन हाउस ने इनको ट्रैप कर लिया था क्योंकि हमारे पास थी ग्रीन हाउस की लेयर, राइट? हमारे पास जो ग्रीन हाउस की लेयर थी जब अल्ट्रावायलेट रेज दे मूव इनसाइड तो इसकी पावर अल्ट्रावायलेट की एब्जॉर्ब हो गई तो कुछ तो स्केप कर गई लेकिन कुछ आपकी अर्थ में ही रुक गई और क्योंकि ये अर्थ में रुकी तो उससे आपका अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होता गया. हम यही बात करते हैं ना कि कराची पहले तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट? तो क्यों हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज की हम बात करें, वर्ल्ड में ह्यूमन एक्टिविटीज की हम बात करें, what is the reason behind that? Continuously deforestation. तो why are we doing deforestation? Why? जब हमें पता भी है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो क्या हम ये चीजें यूज ना करें? अब हम छोड़ दें इनको? ऐसा नहीं हो सकता. It's not possible that now we need to just leave them. No, we cannot, right? But basically what we have to do, we need to look into the new sustainable patterns, what we can do, how we can survive with all these things. So now let's continue. Gases in the Earth atmosphere that trap heat. How they trap heat, I have explained you through this diagram. Alright? Okay. Now this process is called greenhouse effect. So I hope the trapping of heat, how the heat is trapped. Alright?
So it's been explained how they are trapped, that with the earth there's a layer because of the greenhouse gases that the humans are using by cutting down the trees, by using the vehicles, by burning the fossil fuels. So what happened? Alright. So when over there, from the sunlight, when the heat is coming, it's unable to move out. ये ट्रैप हो गई अंदर, और अब ये एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो गई. कुछ फिर भी स्केप कर जाती हैं, लेकिन कुछ स्केप नहीं कर पाते, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस इनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो ये हीट अंदर ट्रैप हो जाती है. इसी वजह से हमारा कंटिन्यूसली वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज हो रहा है. नाउ लेट्स एक्सप्लोर व्हाट आर द मेन ग्रीन हाउस गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ओजोन लेयर. कॉजेस जो मैं आपसे बात कर रही थी, ह्यूमन एक्टिविटीज. हमारी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं? फॉसिल फ्यूल, देयर आर थ्री फॉसिल फ्यूल: ऑयल, कोल एंड गैस. बेटा वी आर कंटिन्यूसली यूजिंग देम, वी आर बर्निंग देम, जिससे हमारी क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है आपके एनवायरमेंट में, जिससे आपकी ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होती हैं. देन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपकी कंटिन्यूसली आपकी फैक्ट्रीज गैसेस रिलीज कर रही होती हैं, स्मोक रिलीज कर रही होती हैं. दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्रीन हाउस गैसेस. व्हीकल स्मोक, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ट्रीज आर अनेबल टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड. The main purpose of the tree is absorbing carbon dioxide, but वो नहीं कर पा रहा. Livestock, students कहते हैं livestock, livestock से कैसे? बेटा livestock releases cow waste, for example cow waste, cow dung, right? वो मीथेन रिलीज कर रहा है. आपका livestock waste मीथेन रिलीज करता है. Alright, chemical fertilizers that we are using, and even in agriculture also we are using them. So these are the some human activities जो causes हैं. अब अगर ये causes हैं तो इसका इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पे क्या आता है? सबसे पहला इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. इस ईयर अगर हम ऑब्जर्व करें, क्लाउड बर्स्ट देखा हमने, राइट. सडन हमने क्लाइमेट चेंज देखा, एक्सटेंडेड विंटर्स देखी, एक्सट्रीम विंटर्स देखी, एक्सट्रीम समर्स देखा, right? So why all these things was happening? Because it's global warming, it's climate change. Melting of the glaciers, and when the glaciers are melting, then sea levels are rising. आपके glaciers melt हो रहे हैं, sea level rise हो रहे हैं. Many of the islands, they are disappearing in the world. Why the islands are disappearing? Because the sea levels are rising. Extreme weather events, as I discussed, the cloudburst. This year we faced cloudburst in Asia. It never happened before, like so frequently, but this time. So these were the conditions, these extreme weather events that we were facing. Hailstorm, hailstorm in Pakistan we saw. It was never before we have seen in such, in such a huge quantity. The size was different this time in Islamabad, even in Karachi. It happens after several years in Karachi, almost a decade, right? So harm to living organisms because of the extreme climatic conditions. Are they suitable for plants? Extreme climatic condition, what will happen with the extreme climatic conditions? Sometimes you have excessive rain, sometimes you have no rain, dry spells. तो क्या होगा? Dry spells होंगे तो droughts. This is how the greenhouse effect is bringing a change in the world. And what is the major cause? What is the major cause? The human activities. So now let's come towards the solution, how to reduce greenhouse gases. Important, plant more trees. Use public transport. Why, miss? Why public transport? This question is asking. Why not public transport? 100 people using their 100 cars and those 100 people using one bus. Don't you think it will bring a great impact? 100 cars releasing smoke and just one bus releasing smoke. That's the difference. We can use trains, bullet trains. We can use different public transportation that is provided by our country. Right. Save electricity. Why electricity? Because more electricity will be using, more fossil fuels will be burning. Until and unless the electricity is produced by the renewable resources. Right. Renewable resources using of solar power, windmills. Right. So on and so on furthermore. Right. So because renewable energies are clean energies. They don't use greenhouse gases. Reduce, reuse, and recycle. Your garbage is releasing
मीथेन गैस, अगर आप अपना रीयूज करते हो अमाउंट अपना गार्बेज का आप रीयूज करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री में गार्बेज प्रोडक्शन रिड्यूस होगी। गार्बेज प्रोडक्शन रिड्यूस होगी तो आपका मीथेन गैस भी लेस प्रोड्यूस होगा, राइट। बेटा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इट्स द बेस्ट वे, क्योंकि इससे आपका वेस्टेज रिड्यूस होता है। ऑलराइट, so these were something regarding how to reduce the greenhouse gases. Not only that, but the effects of greenhouse gases and the causes we studied in detail with the help of the diagram, as this diagram is there in your book also. Hope the concept of greenhouse effect is clear. Please share me your responses through the comments. Please like and subscribe my channel if you have not done up till now. For now, I'm leaving. Allah Hafiz. Take care, everyone.